गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, सो वेलकम टू द प्रीलिम्स बूस्टर सेशन। आज का पहला टॉपिक है मैरीटाइम सर्वेलेंस इनिशिएटिव। तो इंटरनेशनल रिलेशंस टॉपिक के लिए आपके ये इशू इम्पॉर्टेंट है। तो अभी क्वाड नेशंस की मीटिंग हो रही है, तो उसमें कहा जा रहा है कि ये मैरीटाइम सर्वेलेंस इनिशिएटिव को लॉन्च किया जाएगा। और ये इनिशिएटिव क्या है कि एक सैटेलाइट बेस्ड मैरीटाइम सिक्योरिटी सिस्टम बनाया जाएगा क्वाड कंट्रीज़ द्वारा, ताकि चाइना की जो इलीगल फिशिंग एक्टिविटीज़ हैं इंडो पैसिफिक रीजन में, उसके ऊपर जो है चेक लगाया जा सके। तो थोड़ा सा बैकग्राउंड देखते हैं। 95% जो इलीगल फिशिंग एक्टिविटीज़ है इंडो पैसिफिक में, वो चाइना ही करता है। चाइना ऑफन जो है वो इकोनॉमिक जोन्स जो है इन कंट्रीज़ के जो इंडो पैसिफिक में पड़ती है उनको वायलेट करता है। इवन इन्वायरमेंट को भी डैमेज करने में चाइना का बहुत बड़ा रोल है। चाइना के पास डिस्टेंट वाटर फिशिंग करने के लिए 17,000 वेसल्स हैं, जो कि लार्जेस्ट एक आपकी फ्लीट है वर्ल्ड में। तो इस इनिशिएटिव के थ्रू क्या किया जाएगा, सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा। सर्वेलेंस सेंटर्स बनाए गए हैं, जो आपको पता ही है, सिंगापुर और इंडिया में आपका IFC IOR है। तो ये दोनों जो है सर्वेलेंस सेंटर्स नज़र रखेंगे सैटेलाइट टेक्नोलॉजी के थ्रू, और ट्रैक करेंगे कि कहीं इलीगल फिशिंग तो नहीं की जा रही किसी भी कंट्री द्वारा इंडियन ओशन से लेकर साउथ पैसिफिक रीजन में। तो इलीगल फिशिंग को मॉनिटर करने के लिए जो है, अगर जो आपकी बोट्स होती हैं, अब होता क्या है कि चाइना या कोई भी कंट्री अगर इलीगल फिशिंग कर रही है तो जो उनकी बोट्स होती हैं वो अपने ट्रांसपॉन्डर्स को ऑफ कर देते हैं। ट्रांसपॉन्डर्स को ऑफ करेंगे तो फिर उनको ट्रैक करना मुश्किल हो जाता है। तो इसीलिए सैटेलाइट टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा कि अगर वो ऑफ भी कर दे अपने ट्रांसपॉन्डर्स को तो भी उनको ट्रैक किया जा सके। यूएस का कोस्ट गार्ड जो है वो कह रहा है कि इलीगल फिशिंग जो है वो इस टाइम पर पायरेसी से भी ज़्यादा बड़ा खतरा बन चुका है ग्लोबल मैरीटाइम सिक्योरिटी के लिए। तो इसलिए इसके ऊपर टैप करना, इसको जो है रोकना, इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इंडिया का इसमें रोल क्या होने वाला है, जैसे आपको बता रहा हूँ मैं, IFC IOR जो है इसके अंदर जो है बहुत ही एक्टिव रोल प्ले करने वाला है। 2018 में इसको गुड़गांव में बनाया गया था या फिर गुरुग्राम में बनाया गया था, और इसके 50 नेशंस के साथ इंफॉर्मेशन शेयरिंग लिंक्स ऑलरेडी हैं, और ये मल्टीनेशनल या फिर मैरीटाइम सेंटर्स के साथ इसको ऑलरेडी लिंक किया जा चुका है। नेक्स्ट टॉपिक हमारा है इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट। ये भी आपका इंटरनेशनल रिलेशंस का टॉपिक है। तो यूएस गवर्नमेंट और इंडियन गवर्नमेंट के बीच में इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट साइन किया गया है। ऑलरेडी ये एग्रीमेंट 1974 से जो है चल रहा है, बार बार इसको रिन्यू किया जाता है। लास्ट टाइम इसको 1997 में रिन्यू किया गया था। तो हुआ क्या है कि 97 के बाद जो है अभी रिसेंटली 2018 में बिल्ड एक्ट यूएस ने पास किया, जिसके अंदर उन्होंने DFC बनाया, एक डेवलपमेंट फाइनेंस एजेंसी बनाई है। तो उसके अंदर क्या है कि एक रिक्वायरमेंट है कि जिस भी कंट्री के में आप इन्वेस्टमेंट करोगे, इंफ्रास्ट्रक्चर की या जो भी आप इन्वेस्टमेंट करोगे, तो उसके साथ आपका इन्वेस्टमेंट इंसेंटिव एग्रीमेंट साइन होना चाहिए। तो उसी कंटेक्स्ट में इंडिया के साथ उन्होंने साइन किया एग्रीमेंट को। तो ऑलमोस्ट 1974 से अगर हम देखें तो $5.8 बिलियन का इन्वेस्टमेंट सपोर्ट इंडिया को ऑलरेडी मिल चुका है इस जो है इस DFC या इसके प्रीडिसेसर एजेंसीज के थ्रू। अलग अलग जो है सेक्टर्स में, चाहे वो वैक्सीन मैन्युफैक्चरिंग हो, चाहे हेल्थ केयर हो, फाइनेंसिंग हो, रिन्यूएबल एनर्जी हो, हर सेक्टर में इसको इस इनिशिएटिव का जो है इन्वेस्टमेंट इंडिया को देखने को मिला है। सो अब इसके ऑफकोर्स इन्वेस्टमेंट सपोर्ट ज़्यादा होगा इंडिया में इस एग्रीमेंट के बाद, तो इसलिए एग्रीमेंट इंडिया और US के बीच में साइन किया गया है। नेक्स्ट टॉपिक आपका है सिंक होल्स। तो ये आपका एनवायरनमेंट का भी टॉपिक हो सकता है, बट मोस्ट इंपॉर्टेंट ये आपका ज्योग्राफी का टॉपिक है। ठीक है, तो अभी एंशिएंट फॉरेस्ट मिला है चाइना के ग्वांगजी जुआंग ऑटोनॉमस रीजन में। वहाँ के एक जाइंट कास्ट सिंक होल के नीचे जो है आपको एक एंशिएंट फॉरेस्ट देखने को मिला है। बहुत ही बड़ा है ये सिंक होल, 306 मीटर इन लेंथ, 150 मीटर इन विड्थ और 192 मीटर्स इन डेप्थ का है। तो इस एरिया में बहुत सी जो है ये सिंक होल्स मिलते रहते हैं। तो ये सिंक होल्स पहले देखते हैं कि बनते कैसे हैं। सिंक होल्स वो डिप्रेशंस हैं ग्राउंड के अंदर जो कि अर्थ के सरफेस जब कोलैप्स हो जाता है केव्स में, तो उसकी वजह से ये सिंक होल्स बनते हैं। चाहे वो नेचुरल प्रोसेस हो, चाहे ह्यूमन एक्टिविटी हो, दोनों के थ्रू ये सिंक होल्स बनते हैं। तो कास्ट जो रीजन्स होते हैं, कास्ट रीजन्स भी देखेंगे हम क्या होते हैं। तो कास्ट टेरेन्स जो है, वहाँ पर जो है रॉक जो कि सरफेस के बीनीथ होते हैं, अर्थ के सरफेस के नीचे होते हैं, वो ग्राउंड वाटर की वजह से जो है, ग्राउंड वाटर के एक्शन की वजह से है, वो एक तरह से डिज़ोल्व होने लगते हैं। तो डिज़ोल्व होने की वजह से क्या होता है कि वो कमज़ोर हो जाते हैं। जब वो कमज़ोर होते हैं तो वो नीचे धंस जाते हैं, उससे ये सिंक होल्स बन जाते हैं। तो अब ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से भी ये सिंक होल्स बन सकते हैं, चाहे वो ब्रोकन लैंड ड्रेन्स हो, सीवरेज पाइप्स हो, ज़्यादा रेनफॉल हो, इन सब रीज़न की वजह से भी जो है ये लाइमस्टोन या जो है के जो रॉक्स होंगे नीचे वो धंसने लगते हैं, और ये सरफेस वाटर जो है
इस पे जो है वो डाइवर्ट हो जाता है इनकी तरफ और ये सिंक होल्स फॉर्म हो जाते हैं। तो हम कास्ट टोपोग्राफी भी देख लेते हैं इसी के साथ समझने के लिए। तो कास्ट टोपोग्राफी वो है जो कि जो रॉक्स हैं, जैसे आपके लाइमस्टोन, डोलोमाइट या जिप्सम के रॉक्स हैं, उनके ऊपर किसी भी तरह से वाटर का एक्शन होता है, खासकर जो है आपके ग्राउंड वाटर का एक्शन की वजह से वो कमज़ोर होने लगते हैं और फिर वो सिंक होल्स और केव्स बना देते हैं। ठीक है, तो लाइमस्टोन जैसा जो आपका रॉक है, डेंस कार्बोनेट रॉक, वो जब पानी की वजह से जो है सिंक होने लगता है नीचे, अर्थ के सरफेस के नीचे, तो वो रॉक्स जो है आपके सरफेस वो सिंक होने वो कमज़ोर होने लगते हैं और वो नीचे धंस जाते हैं। उसकी वजह से ये कास्ट टोपोग्राफी बन जाती है। तो जहाँ पर वाटर टेबल जो है वो बहुत लो है और ऐसे एरियाज़ जहाँ पर रेनफॉल जो है वो मॉडरेट से हैवी होती है, तो उसमें क्या होता है कि पानी का एक्शन ज़्यादा हो पाता है। तो ग्राउंड वाटर के लिए जो है जब डाउनवर्ड मूवमेंट होती है वाटर की ग्राउंड वाटर से मिलने के लिए, तो उसकी वजह से जो है बेड रॉक जो है वो उसकी डिसोल्यूशन होनी शुरू हो जाती है और उसकी वजह से ये कास्ट टोपोग्राफी बनती है। ठीक है, तो ये सिंक होल्स भी उसी का ही एक पार्ट है। तो इंडिया में कास्ट टोपोग्राफी आपको विंध्यान रीजन में देखने को मिलेगी, हिमालय में देखने को मिलेगी, पंचमढ़ी में देखने को मिलेगी और गुप्त गोदावरी केव चित्रकूट में भी देखने को मिलती है। ठीक है, बेसिकली जहाँ पर भी पानी का एक्शन आपको इस जो है ये लाइमस्टोन वाले एरिया, जो आपके लाइमस्टोन जैसे रॉक्स या फिर डोलोमाइट या जिप्सम जैसे रॉक्स के ऊपर पानी का एक्शन देखने को मिलेगा, वहाँ पर ये कास्ट टोपोग्राफी बन जाती है। ठीक है, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है संगीता कलानिधि अवार्ड। तो ये जो है अवार्ड मद्रास म्यूज़िक एकेडमी द्वारा अनाउंस किया जाता है। तो इस साल जो है पिछले 3 साल के अवार्ड्स को अनाउंस किया गया है। तो ये मद्रास म्यूज़िक एकेडमी क्या है, ऑफ कोर्स कार्नेटिक म्यूज़िक जो है उसको प्रमोट करने के लिए ये एकेडमी को बनाया गया था। हुआ क्या कि 1927 में जब ऑल इंडिया कांग्रेस का सेशन मद्रास में हुआ, तब ये डिसाइड किया गया कि एक कार्नेटिक म्यूज़िक को प्रमोट करने के लिए एक मद्रास म्यूज़िक एकेडमी होनी चाहिए। तो एक तरह से आप कह सकते हो कि जो ऑल इंडिया कांग्रेस का मद्रास सेशन था, उसी का ही ऑफ शूट ये मद्रास म्यूज़िक एकेडमी है। तो ये अवार्ड्स, इसके जो अलग अलग तरह के अवार्ड्स देती है ये मद्रास म्यूज़िक एकेडमी, वो यहाँ पर मेंशन किए गए हैं। जैसा कि है आपका संगीता कलानिधि अवार्ड, तो ये एक पर्सन को मिलता है जिसने किसी भी तरह से कार्नेटिक म्यूज़िक के फील्ड में कंट्रीब्यूशन दिया हो। जिस पर्सन को ये अवार्ड मिलता है तो उसको 2005 से MS सुब्बुलक्ष्मी अवार्ड भी जो है वो दिया जाता है, जो कि हिंदू आपके जो न्यूज़पेपर ग्रुप है वो देता है। ठीक है, और भी बहुत सारे के अवार्ड हैं, ये आपको याद रखने की ज़रूरत नहीं है, बट आप इसको एक बार पढ़ सकते हो। नेक्स्ट टॉपिक आपका है इंटरनेशनल टी डे। तो 21 मई को हर साल हम इंटरनेशनल टी डे मनाते हैं। फर्स्ट इंटरनेशनल टी डे जो है वो आपका दिल्ली में सेलिब्रेट किया गया था 2005 में। 2015 में इंडियन गवर्नमेंट ने प्रपोज किया UNFAO को कि हम इस डे को ग्लोबली मनाना चाहते हैं। तो तब से हर साल जो है 21 मई को जो है इंटरनेशनल टी डे मनाया जाता है। ठीक है, तो अब क्यों मनाया जाता है मई में, क्योंकि मई ही है वो टाइम होता है जब टी की प्रोडक्शन बहुत सारी कंट्रीज़ में शुरू की जाती है। तो टी जो है उसका इंडिया के साथ कनेक्शन थोड़ा सा देखते हैं। तो नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट्स ऑफ इंडिया और साउथ वेस्टर्न चाइना में कहा जाता है कि टी यहीं से ही ओरिजिनेट हुई है। तो इंडिया ने टी बोर्ड ऑफ इंडिया भी बनाया है इसी के लिए, जो कि जिसका हेडक्वार्टर कोलकाता में है और ये मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंडर आता है। तो टी बोर्ड जो है वो एक टी डेवलपमेंट एंड प्रमोशन स्कीम भी जो है वो इम्प्लीमेंट कर रही है, जिससे कि फाइनेंशियल असिस्टेंस प्रोवाइड की जाती है टी इंडस्ट्री को हमारी कंट्री में। सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है फाइटो रेमिडिएशन। तो ये आपका साइंस एंड टेक का भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इवन इन्वायरमेंट के लिए भी आपके टॉपिक इंपॉर्टेंट है। तो एक स्टडी पब्लिश हुई थी 2015 में, जिसमें कहा कि इंडिया में सॉइल के ऊपर जो है हैवी मेटल पॉल्यूशन हो रहा है, उसकी वजह से जो है सॉइल की जो है वो डिग्रेडेशन हो सकती है। तो उससे डील करने के लिए फाइटो रेमिडिएशन का जो है वो सजेशन दिया गया है। तो इसमें होता क्या है, फाइटो रेमिडिएशन में आप प्लांट्स या फिर सॉइल माइक्रोब्स का यूज़ करते हो ताकि जो टॉक्सिक इफेक्ट्स हैं कंटामिनेंट्स के, चाहे वो मेटल हो, उसको कम किया जा सके। ठीक है, तो एक बहुत ही कॉस्ट इफेक्टिव इन्वायरमेंटल रिस्टोरेशन टेक्नोलॉजी है। लेकिन ये फाइटो रेमिडिएशन जो है वो सिर्फ रूट जोन ऑफ प्लांट्स जो एरिया है सिर्फ वहीं पर ही जो है लिमिटेड होता है। ठीक है, तो अब हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स ये क्या होते हैं। अब हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स वो प्लांट्स हैं जिनका यूज़ किया जाता है कि टॉक्सिक मटेरियल जो सॉइल में, अब होता क्या है कि समझ लो कि एक एरिया में आपको दिख गया कि यहाँ पर मेटल का पॉल्यूशन है, सॉइल ख़राब होने वाली है, तो आप वहाँ पर ये हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स को जो है वो लगा दोगे ताकि जो प्लांट्स हैं वो एब्जॉर्ब कर लें वो टॉक्सिक मटेरियल को और जो है अपने लिविंग टिश्यू में उसको एक्यूमुलेट कर लें। उससे क्या होगा कि आपकी सॉइल जो है वो क्लीन हो जाएगी। ठीक है, सो जनरली जो है ये हाइपर एक्यूमुलेटर प्लांट्स जो है वो निकल और जो है
जो है कोबाल्ट ऐसे जो है मेटल्स को जो है वो एब्जॉर्ब कर लेते हैं और इसकी वजह से जो है ये प्लांट जो सॉइल को बचा लेते हैं, ठीक है। सो अब बहुत सी आपके रीजन जो आपके मेडिटेरेनियन रीजन है, चाहे वो आपका ब्राज़ील, क्यूबा या न्यू कैलेडोनिया रीजन है, वहाँ पर ये हाइपर एक्यूमुलेटर स्पीशीज़ जो है वो डिस्कवर की जाती हैं और इनका यूज़ वर्ल्ड वाइड किया जाता है फाइटो रेमिडिएशन के लिए, ठीक है। तो फाइटो रेमिडिएशन के जो है फ़ायदे क्या हैं? ऑफ कोर्स ये कॉस्ट इफेक्टिव है और ये बहुत ही सिंपल है, इसके लिए कोई स्पेशलाइज्ड टेक्नोलॉजी की ज़रूरत नहीं, सिर्फ आपको प्लांट उगाना है ये वाला, ठीक है। और इस प्लांट को उगाने से क्या होता है कि आपके जो है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स जो है ऑर्गेनिक सब्सटेंसेस भी आ जाते हैं सॉइल में और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी आ जाते हैं, जिससे कि आपकी क्वालिटी ऑफ सॉइल जो है वो अच्छी हो जाती है, ठीक है। फिर क्योंकि आप वहाँ पर प्लांट्स को उगा रहे हो तो विंड और वाटर इरोजन से भी आप सॉइल को बचा पाते हो। नेक्स्ट आपका टॉपिक है स्टोरेज गेन। तो ये आपका इकोनॉमी का टॉपिक है। तो एक्चुअली हुआ क्या है कि अभी रिसेंटली वीट प्रोक्योरमेंट हुआ है, लेकिन पंजाब की स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज कह रही हैं कि हमें वेवर चाहिए स्टोरेज गेन का भी। तो हम देखते हैं स्टोरेज गेन होता क्या है। तो स्टोरेज गेन क्या होता है? तो एक्चुअली जो वीट है उसको हम एक तरह से लिविंग ग्रेन मानते हैं, क्योंकि ये जब आप इसको काट के भी रख भी लेते हो तो आप जो इसकी जो है तो इसका जो ग्रेन है ये वेट गेन करता रहता है। क्यों गेन करता रहता है? क्योंकि ये मॉइस्चर को अब्जॉर्ब करता रहता है, ठीक है। तो इसके 3 पार्ट होते हैं आपके वीट ग्रेन के। एक तो होता है ब्रैन जो कि आपका आउटर लेयर है, जर्म जो कि इनर लेयर है, जो कि और तीसरा होता है एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म जो स्पर्म है जो है वो इसका बल्क ऑफ द मटेरियल है, जिसमें मिनरल्स और विटामिन जो है वो होते हैं आपके वीट के ग्रेन में, ठीक है। तो जो भी मॉइस्चर है वो ये एंडोस्पर्म ही जो है उसको एब्जॉर्ब कर लेता है। तो इस क्योंकि जो है आपका जो है वीट का जो आपका ग्रेन है वो मॉइस्चर को एब्जॉर्ब करता है, तो ऑफ कोर्स अगर आपने 100 किलो रखा है तो वो वेट जो है वो आपका मॉइस्चर जब एब्जॉर्ब करेगा तो हो सकता है कि वो 100 किलो जो है वो 101 किलो बन जाए, ठीक है। तो उसी से डील करने के लिए जब स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज जो हैं अपने गोडाउन्स में वीट को स्टोर करती है, तो फूड कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया जो है उसको वो 1 किलो एक्स्ट्रा पर क्विंटल वीट देती हैं, क्योंकि आपको पता ही है क्योंकि उसने स्टोरेज गेन कर ली है। तो उस स्टोरेज गेन जो उसने किया उसको कंपनसेट करने के लिए एफसीआई को जो है 1 किलो एक्स्ट्रा वीट देना पड़ता है, क्योंकि एफसीआई तो नहीं तो ये कहेगा ना कि आपने मुझे 101 जो केजी जो ग्रेन दिया है वो एक्चुअली 100 किलो है, क्योंकि एक किलो तो उसने जो है वो मॉइस्चर गेन किया हुआ है, ठीक है। तो इसीलिए जो है उसको एक्स्ट्रा 1 किलो और देना पड़ता है वीट जो है स्टेट प्रोक्योरमेंट एजेंसीज को, एफसीआई को, क्योंकि जो वीट वो बेच रही हैं एफसीआई को वो ऑलरेडी उसमें मॉइस्चर गेन किया हुआ है, ठीक है। लेकिन इस साल क्या कहा जा रहा है कि पंजाब की प्रोक्योरमेंट एजेंसीज ये कह रही हैं कि जो हमारा ग्रेन है उसने मॉइस्चर गेन नहीं किया है, इसीलिए आप हमको जो हमको पैसा है उसका जो है वो वापस दो, ठीक है। तो एफसीआई जो प्रोक्योरमेंट जो कर रहा है उसमें क्योंकि वो कह रहे हैं कि आप हमारे जो 100 किलो का जो ग्रेन है वो 100 किलो का ही है, उसने 1 किलो जो एक्स्ट्रा गेन नहीं किया है, तो आप जो है इसके हिसाब से आप हमें पैसा दो हमारे, क्योंकि जो है वो इस बार मॉइस्चर गेन नहीं हुआ है। तो हम आपको ओरिजिनली आपको जो हमने 1 किलो एक्स्ट्रा जो आपको हमने पे कर दिया है, 1 किलो एक्स्ट्रा जो आपको हमने दिया है पर क्विंटल, उसके हिसाब से आप हमें पैसा दो, हमारे को स्टोरेज जो गेन है उसको वेवर दो, ठीक है। सो यही जो है न्यूज़ में चल रहा है, स्टेट एजेंसीज यही कह रही हैं, क्योंकि इस बार जो है आपका वीट का जो ग्रेन है वो बहुत ही ब्रोकन है, इसलिए वो ज़्यादा वेट गेन नहीं कर पाएगा, ज़्यादा मॉइस्चर गेन नहीं कर पाएगा। इसीलिए पंजाब की स्टेट एजेंसीज जो है प्रोक्योरमेंट एजेंसीज वो स्टोरेज गेन वेवर मांग रही हैं। नेक्स्ट आपका टॉपिक है वी टोल्स। तो ये आपका साइंस एंड टेक का टॉपिक है। तो इलेक्ट्रिक यूनियन मिनिस्टर ऑफ सिविल एविएशन जो है वो ये कह रहे हैं कि इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट इंडिया में आने वाला है, जिससे कि अर्बन एयर मोबिलिटी में जो है वो आपको फ़ायदा होएगा, ठीक है। तो अभी ये इलेक्ट्रिक वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग एयरक्राफ्ट क्या होता है कि ये इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करेगा टेक ऑफ करने के लिए और लैंड करने के लिए और होवर करने के लिए भी, ठीक है। तो इससे क्या होगा कि आप इसको अर्बन एरियाज़ में यूज़ कर सकते हो, ठीक है। तो आप अर्बन एरियाज़ में एक तरह से ये आप देखोगे तो ये एयरक्राफ्ट हेलीकॉप्टर जैसा देखने को मिलेगा और इसमें क्योंकि फ्यूल यूज़ नहीं हो रहा है तो इलेक्ट्रिक पावर का यूज़ करते हो, आप इसको यूज़ कर सकते हो और आप अपनी पॉपुलेशन जो आपके अर्बन एरियाज़ में रह रही है उसको एक जगह से दूसरी जगह आसानी से लेके जा सकते हो।
ठीक है। तो क्योंकि अब न्यू व्हीकल्स की बहुत ज़रूरत पड़ रही है, तो अर्बन एयर मोबिलिटी जो है उसके ऊपर भी ध्यान देना पड़ेगा, ट्रैफिक की कंजेशंस को ठीक करने की तरफ भी ध्यान देना पड़ेगा। तो ये जो आपका ई वी टोल्स हैं, ये एक सोल्यूशन हमको देखने को मिल रहा है, ठीक है। बहुत सी एयरक्राफ्ट कंपनीज हैं जैसे बोइंग, एयरबस, एम्ब्रेयर, होंडा, टोयोटा, hyundai एंड नासा, ये ऑलरेडी ऐसे एयरक्राफ्ट डेवलप कर चुकी हैं। So now let us see all these topics in English. So the first topic is Maritime Surveillance Initiative. So this topic is important for your international relations section. So Quad nations are going to launch this Maritime Surveillance Initiative to check illegal fishing by China. Okay, so this will be a satellite based maritime security system. So actually let us see the background also. So China is responsible for 95% of illegal fishing activities in the Indo-Pacific region. Many countries in this region have complained that China often violates their economic zones, and it also causes damage to the environment because it goes for illegal fishing activities in this region. China has almost 17,000 vessels, distant water fishing vessels. It is the largest fleet in the world, and it goes for illegal fishing in these areas. So to combat this threat, this maritime surveillance initiative is being launched by Quad countries. So what is this initiative? Actually, under this initiative, Quad countries will use satellite technology, and it will create a tracking system to track the illegal fishing activities from the Indian Ocean to the South Pacific Ocean. Okay, so they will connect surveillance centers which are located in Singapore and India to keep a track over such illegal fishing vessels. So actually what happens is that whenever there is illegal fishing going on, the boats generally turn off their transponders so that they cannot be tracked. But when satellite technology will be utilized, we would be able to monitor those illegal fishing activities even if the boats turn off their transponders. Okay, so this move is aimed to stop China from the alleged illegal fishing and reduce the dependence of small Pacific islands on China. Okay, so US Coast Guard has also confirmed that illegal fishing has outpaced piracy as the top global maritime security threat. Okay, so this illegal fishing has become the topmost global maritime security threat, and even it has overtaken piracy or sea piracy as the security threat. Okay, so what will be the role of India? Like I've told you that IFC IOR, which is located in Gurgaon or Gurugram, it was established in 2018. It will play a crucial role in this initiative against illegal fishing. It already has information sharing links with 50 nations and other maritime centers. So it will be best poised to act as the surveillance center in this initiative. So the next topic is investment incentive agreement. This topic is also important for your international relations section. So government of India and government of USA, they have signed this investment incentive agreement at Tokyo. So this agreement is not something new. It already existed since 1974 in one form or the other. This one is basically a new agreement, and it has renewed the 1997 agreement. So after that, in 2018, the BUILD Act was passed by USA, and it established this development finance agency. And because of this new agency, it is important, it is a legal obligation on part of USA to get into investment incentive agreements with member countries for the development finance to travel to these countries. Okay, so this is not something new. Like I've told you, since 1974 it has been in India in one form or the other. So far we have received about $5.8 billion of investment support from this initiative, and it has this initiative is divided into several sectors, like even vaccine manufacturing, healthcare financing, renewable energy, small and medium industry financing. So all these areas have been covered, including infrastructure. Okay, so what will be the benefit of it? Of course, enhanced investment support would be given. So that's why India's development story would get a further shot in the arm. So the next topic is sinkholes. This topic is important for your geography section, but it can also come in your environment section also. So
recently a cave exploration team was exploring the giant cast sinkhole in the Guangxi Zhuang autonomous region of China, and they have discovered an ancient forest at the bottom of that sinkhole. So this sinkhole is very big, and in 2016, this area also the scientists also discovered world's largest cluster of sinkholes in this area. And what are these sinkholes? Now we have what topic is important for us is what are sinkholes and what is karst topography. So sinkholes are basically the depressions which are formed in the ground when the rocks or the underlying the earth's surface start collapsing. Okay, why they collapse? Because of the activity of water. So what happens is generally is that the groundwater or the water on the surface of the earth, when it starts seeping into the earth's surface, it starts dissolving the underlying rocks, which are generally made up of limestone and dolomite and gypsum. So if these three rocks are there, then they start getting dissolved, and when they dissolve below beyond a certain point, then they start collapsing, and they collapse into the caves to form caves. So that is what we call karst terrains, and this can happen due to natural processes and even human activity also. Okay, so natural processes because of course excessive rain or groundwater very low at very low levels. In that case also, these limestone, dolomite or gypsum rocks can start dissolving, or even due to human activity. We can have these sewage pipes through which water may be leaking, or storm events, or any method due to which the water starts seeping into the earth's surface. Okay, so this is how the sinkholes are formed. So what is karst topography? So karst topography is formed when the soluble rocks like limestone, dolomite and gypsum, and most probably the limestone, it starts it starts dissolving because of underground drainage systems, and that's why when they dissolve completely, they form the sinkholes and caves. Okay, so they are mostly developed when the water table is relatively low in areas, or where if their rainfall is moderate to heavy in that area. Okay, because of this rapid downward movement of groundwater, this dissolution of the bedrock gets promoted, and this sinkholes and this caves start forming. So in India, this type of topography is present in Vindhya region, Himalayas, Panchmadi, and Gupt Godavari cave in Chitrakoot. Okay, so that's where this karst topography is present in India. So basically, all these areas where this limestone is dominant as the bed is predominantly the bedrock, and water activity of the upon these bedrock start making this karst topography. Okay. So the next topic is Sangeeta Kalanidhi Award. So Madras Music Academy has recently announced this Sangeeta Kalanidhi Award winners for the last 3 years. So what is this Madras Music Academy? So this academy plays an important role in promoting Carnatic music in India. So what happened in 1927 was that when All India Congress session was being held in Madras, they suggested that a music academy should emerge from this area of Madras, and next year this Madras Music Academy was inaugurated. So basically it's an offshoot of all India Congress Madras session of 1927. So this Sangeeta Kalanidhi Award has recently been announced. It is awarded to a person who has contributed to the field of Carnatic music, and since 2005, this winner of this Sangeeta Kalanidhi Award also receives the MS Subba Lakshmi Award, which has been instituted by the Hindu group of newspapers. So the next topic is International Tea Day. So topic is important for your economy section. It has been this International Tea Day is observed each year on 21st of May. So first time it was observed in Delhi in 2005. But only in 2015 the government of India proposed to the UN FAO that it should be expanded to the global level. So why we celebrated on this 21st of May? Because in the month of May, tea production begins in most of the countries. So what is the relation of tea with India? So it originated from the northeastern parts of India and southwestern China. For the promotion of tea,
the government of India enacted this Tea Act in 1953, through which this Tea Board of India was established in Kolkata. It falls under the administrative control of Ministry of Commerce and Industry. So government of India is also promoting a tea development and promotion scheme through this Tea Board of India, which is providing financial assistance to the tea industry in the country. So the next topic is phytoremediation. This topic is important for your environment section. So a study by a research journal in 2015 suggested that heavy metal pollution of soil in India is increasing, and that's why the soil is suffering due to industrialization. So scientists are suggesting that eco-friendly technologies like phytoremediation can be used to combat this metal pollution of our soils. Okay, so what is phytoremediation? In this technique, we use plants and associated soil microbes to absorb the contaminants from the soil. So it's a very cost-effective restoration technology, and but it has limited application because the concentration of contaminants can also be toxic to plants. Okay, so there are hyper accumulator plants, which are basically the plants which are utilized in this phytoremediation technique to absorb the toxic materials present in the soil. And these plants basically absorb this material and they accumulate in their living tissue. This technique is very cost effective also, and generally these hyper accumulator plants accumulate nickel and cobalt, and in some cases manganese also, and they end up cleaning the soil. Okay, so what are the advantages of this phytoremediation? This topic is important for your prelim section because they can ask a question regarding this. Generally they ask the question regarding the application of these techniques. Okay, so it is like very cost effective. You just need these hyperaccumulator plants to clean the soil. It is very simple. You do not need any specialized technology for that, and if you are employing this technology, you will end up enriching the soil with organic matter and microorganisms. Okay, so the next topic is storage gain. So this topic is important for your economy section. So recently wheat procurement has happened, and now the Punjab state procurement agencies are seeking a waiver of storage gain. So what is storage gain in wheat? So actually wheat is considered as a living grain because it keeps on accumulating or absorbing moisture, and it gains weight during the storage. Okay, so generally this wheat grain has three parts. First is the bran, which is the outer layer; germ, that is the inner layer; and endosperm, which is the bulk of the grain, which contains mineral and vitamins. So this endosperm is the part which keeps absorbing the moisture, and it ends up increasing the weight of the wheat grain. Okay, so what happens is that, let's say this Food Corporation of India has procured 100 kg of wheat grains from state procurement agencies, but then FCI would say that okay, this weight is saying that it is 100 kg, but actually it is 99 kg. Okay, we are just taking an example. It is not hard and fast rule. I'm just taking an example that FCI would say that we have procured 100 kg of wheat grain from you, but it is actually 99 kgs because 1 kg is the weight that these grains have absorbed the moisture from the air. Okay, so to compensate for that storage gain, state procurement agencies would do what they would do is that they would provide 1 kg extra grain to the Food Corporation of India, and because they to compensate this storage gain. Okay, so but what has happened this year is that because the grain which has been procured is broken and shriveled, the state procurement agencies are saying that this grain is not gaining any weight or gaining any moisture. That's why FCI may have taken 1 kg extra per quintal from us. So we want this storage gain waiver. We want 150 crore rupees extra from the FCI for that, to compensate us for because there has been no storage gain this year. Okay, so this is the issue, and that's why Punjab state's procurement agencies are asking for the storage gain waiver.
So the next topic is eVTOLs. So Union Minister of Civil Aviation has said that India will soon see the deployment of electric vertical takeoff and landing aircrafts to ensure urban air mobility in the area in the time. So what is this electric vertical takeoff and landing aircraft? Basically, it is a tool or it is a transportation method which has been in operation since the last few years, and this will use electric power for this. So this eVTOL would look like a helicopter to you, but of course it would be electrically powered, and it would take off vertically, and it would hover, take off, and land vertically. It is going to take off a lot of congestion of traffic from urban areas, because we are going to explore the these air transportation methods in our urban mobility. Okay, so this eVTOL would help us in this direction. Many companies are already developing these aircrafts like Boeing, Airbus, Honda, etc. So Union Minister of Civil Aviation is saying that India would also go forward to this eVTOL aircraft to ensure urban air mobility in the country. Okay, so these were our topics for today. We'll meet next time with new topics. Until then, goodbye and take care.